Good morning, viewers. This is Sukhvinder here once again before all of you. I hope all of you are doing very well. Let's see how we can start with the topic story writing, which is meant for class 9th, 10th. 6th onwards, also story writing is introduced for your benefit. Let us start with the hints and way of writing a story. हिंट्स के साथ कैसे डेवलप करना है स्टोरी को ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी. So let us start with the presentation. I hope you will be confident enough after the video is over. You will be confident enough to write a good story with the help of hints. So let us start. As I told you, thumb rule again is basic grammar. You need to know all the basic concepts of English grammar so that when you're writing a story also, using the hints, you can at least elaborate the points in a systematic manner. Plus, you can write it grammatically correct, right? This is what is required when you're a student of language, especially English language. So let's see how we can start with it. First of all, what is story writing? Story writing hai kya? It is not that you just invent your own points, you write anything and everything. It is a basic format for writing your own creative ideas with the help of given points or hints. Story writing is a writing of narrative tale that gives an account of imaginary or past events. It is perhaps the oldest form of creative work. क्रिएटिविटी पे आजकल बहुत जोर है, बच्चों में नई नई खूबियां निकल के सामने आ रही हैं. तो क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए वी हैव टू गिव देम सम काइंड ऑफ इनपुट. विद द हेल्प ऑफ दोज इनपुट्स a child can express his or her ideas in a systematic manner with the help of hints. So this is a part of creativity and part of creative work. स्टोरी राइटिंग पहले भी हम लोग बहुत कहानियां सुनने की आदत है हम लोग को. अपने जो घर के बूढ़े होते थे वो कहानियां बहुत सुनाते थे आपको. हम लोग सुनते थे और आगे क्वेश्चन करते थे. उसमें भी कई बार पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अपनी इमेजिनेशन से कुछ ऐड करते थे, कुछ डिडक्ट करते थे, है ना. इस तरह से उनकी क्रिएटिविटी के साथ साथ आपकी भी एक इमेजिनेशन डेवलप होती. Now things have changed. You are on a different platform. Your way of handling everything is different from previous days. We are techno friendly nowadays. We are exposed to internet and all the services given by the net. बहुत सारी चीजें डेवलप हो चुकी है हमारे सिनेरियो में, प्रेजेंट सिनेरियो में. इस वजह से हमें अपडेट रहने के लिए क्रिएटिविटी का जो स्किल है उसको हमें डेवलप करना है. और डेवलप करने का तरीका यही है कि आपके पास कुछ पॉइंट्स है, उसको आप डेवलप करना सीखते हो. उसको कैसे आपको कनेक्टर्स यूज करके, कैसे आपको फ्रेजेस और क्लॉजेस का यूज करके और गिवन हिंट्स को यूज करके आपको कैसे एक अच्छी मीनिंगफुल स्टोरी लिखनी है विदाउट चेंजिंग द स्ट्रक्चर. जो एक स्केच बना के दिया गया होता है हिंट्स के रूप में, उसको उसका मीनिंग चेंज किए बगैर आप एक अच्छी सी स्टोरी लिख सकते हो. और ये सब आपका प्रैक्टिस से ही पॉसिबल होगा. अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, enrich yourself with your basic grammar in English. When you're writing something in language, you have to be perfect in grammar as it is the backbone of any and every language. बार बार आपको इसलिए इस बात पे मैं जोर देती हूँ ताकि आपको एहसास हो कि ये चीज आपको अपनी लाइफ में एड ऑन करनी है. अदरवाइज यू विल फाइंड योर सेल्फ हैंडीकैप कि क्या करना मुझे, अब क्या लिखूं, इस वर्ड के बाद क्या सेंटेंस आएगा. इससे पहले मैंने रीअरेंजिंग वर्ड्स इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस के ऊपर एक वीडियो पब्लिश की थी. उसमें आपको मैंने यही बताया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रखते हुए आपको रीअरेंज करना है वर्ड्स. हिंट्स स्टोरी राइटिंग में वही रोल अदा करते हैं. हिंट्स गिव यू अ चांस टू एक्सप्रेस योरसेल्फ with adding your own creative skills.
Now let us see. It is writing of narrative tale that gives an account of imaginary और past events. Narrative tales क्या होती है कि आप किसी को कहानी सुनाते हो, अपनी आप बीती सुनाते हो, वो एक स्टोरी के रूप में आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे आपको इमेजिनेशन भी यूज करना है, पास्ट इवेंट्स को सामने रखना है। ठीक है, स्टोरी राइटिंग आजकल हर फील्ड में बहुत इम्पोर्टेंट एक फील्ड बन चुकी है। many people are making the best use of story writing, क्योंकि जितने आपके सीरियल्स चल रहे हैं, जितनी मूवीज आ रही हैं, जितना आपके वेब सीरीज चल रही है, बहुत सारी चीजें जिसमें स्टोरी राइटिंग के स्किल वाले टैलेंट आपके काम आ रहे हैं। इसके अलावा भी व्हेन यू आर आंसरिंग योर क्वेश्चंस, you learn how to write your answer with the help of your previous knowledge, with the help of the hints given in the chapter. So this is one of the oldest form of creative work. Nowadays we have many fields, but earlier story writing was one of the most important and oldest form of creative work. Sorry. Now, when do we start writing a story and how do we start? This we must understand, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप सिस्टमेटिक वे में करेंगे तो उसका रूप अच्छा निकल के आएगा. If you have your points clear in your mind that we have to start writing the story, first we have to do this, then this, then your story will be perfect, and the way you will use your hints, that will be appropriate. So before going to start story writing, we should always keep in mind the following points. These are few important points which you should keep in your mind. A story must not be too big or too small. जो भी स्टोरी आप लिख रहे हैं ना तो वो बहुत इलेबोरेट, बहुत ज्यादा डिटेलिंग के साथ हो, ना ही बिल्कुल एकदम आपने एक हिंट को यूज किया उसको सेंटेंस बना के एक सेंटेंस पे लिख दिया. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दैट इज रिक्वायर्ड. So story must have a beginning, a middle and an end. Middle means उसका कोई स्टोरी की जहां से शुरुआत हुई है वो उसका कोई ना कोई बीच का हिस्सा समझ आना चाहिए स्टोरी पढ़ने के बाद, और फाइनली द एंड ऑफ द स्टोरी. The event should be narrated in a chronological order of sequence. Sequence अगर आप proper maintain नहीं करेंगे, again you will be in trouble. Then again your story will be senseless. So you have to present your ideas with the help of the given hints. If you don't have the hints, then also if you have a background with you that this is the topic, we have to write a story like this, then try to develop the story in chronological order. Chronological order is sequence. किस तरह से हुआ, पहले क्या हुआ है ना, दूसरे स्टेप पे क्या हुआ, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना. स्टोरी इज जनरली रिटन इन पास्ट टेंस. व्हाई इट इज रिटन इन पास्ट टेंस? क्योंकि ये जो बात हो चुकी है वो हम किसी को सुना रहे हैं कहानी के रूप में. कहानी हम सुनाते हैं लोगों या हम कहानी लिखते हैं, तो जो हो चुका है उसको अगर हम लिख रहे हैं तो नेचुरली इट हैज टू बी इन पास्ट टेंस. अब पास्ट टेंस आपको पता लग गया कि हाँ पास्ट टेंस में लिखनी है, तो पास्ट टेंस क्या बना है भाई, ये आपको अगर ग्रामर से कनेक्टिविटी नहीं है तो आपको नहीं समझ आएगा. इसलिए अगेन structure of past tense should be there in your mind, and that is subject plus V2 plus RPS. इसके साथ और भी नेगेटिव आप यूज करके कर सकते हो, और जो मैंने टेंसेस की वीडियोस शुरू में अपलोड की थी उसको आप एक बार दोबारा से देख लीजिए. So story is generally written in past tense. तो past tense को आपको ध्यान में रखना है. So I will just take a highlighter and I will try to show you here how we can. Okay, I could not select it. Let's see again. Highlighter, and this is the highlighter. So I'll just highlight the word past tense ताकि ये आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाए कि हमें जो स्टोरी लिखनी है उसको किसमें लिखना है, हमें past tense. ठीक है. Now to make the narrative more interesting, dialogues, very good. Dialogues और conversations, ये सब चीजें भी आपको यूज करनी है. इससे स्टोरी में थोड़ा सा इंटरेस्ट आया था रीडर.
ठीक है, next. Now, tips before writing a story. Same things are there, but in a different way we are looking at it. थोड़ा रिवाइज भी हो रहा है साथ में, और थोड़ी कोई और नई चीजें आपकी ऐड हो रही. So to make the narrative more interesting, जैसे मैंने बताया आपको पहले कि dialogues are important. Conversations style use किया जा सकता है when two people are talking to each other, two or more than two are talking to each other. तो conversation के रूप में भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है रीडर को, क्लियर हो जाता है कि ये डायलॉग इसने बोला है, ये चीज ये वाला कैरेक्टर बोल रहा है. So whenever you want to make a story interesting, you have to take all these things in your mind. The story must have an interesting conclusion. कोई भी स्टोरी अगर इंटरेस्टिंग वे में कंक्लूड नहीं होती है, it becomes a kind of a boring script for people who are reading it. So you must write the end of the story, the conclusion of the story in such a way that the reader, after reading a story, is happy, either happy or sad, whatever. But there should be a proper, interesting conclusion. That is, the end of the story should be interesting. And of course, based on the events in the story. बहुत से आपने सस्पेंस थ्रिलर देखे होंगे, एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है आपके मन में कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा. So that capturing of your thoughts and your attention, the capturing the interest of the reader should be kept in mind while writing a good story. Language should be lucid, limpid and refreshingly fluent. फ्लुएंट क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर आपकी सारी स्टोरी तरीके से फ्लो नहीं कर रही है, थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं है, और आपकी इमेजिनेशन जो है वो क्लियर नहीं हो रही, किसी को रीडर को आपकी इमेजिनेशन पकड़ में नहीं आ रही, तो अगेन द रीडर विल लूज इंटरेस्ट इन रीडिंग द स्टोरी. The imagination power plays a very crucial role in writing a story. आपकी जो imagination है वो बहुत important है. Therefore, your creative skills are developed. When you think what will happen after this, what is going to happen now, then correlate the past events with your present ideas. All these things need to be kept in mind before writing an interesting story. When you're having your hints, that time also, whatever you have to add in that story, whatever creativity you're developing, whatever imagination you're developing, that should be proper in connection with the hints. हिंट्स में कुछ और जा रही है स्टोरी, और आपके जो एडिशनल आप उसमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या अपना इमेजिनेशन इंक्लूड कर रहे हैं, वो अलग है, तो इट इज अगेन यूजलेस. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट इन स्टोरी राइटिंग. Now, developing hints. आपकी कंसर्न क्या है? How to develop the hints before writing a good story. Points to remember: read the passage twice or thrice and carefully. Okay. Then understand the passage well. This passage is not the whole complete passage. It is just the hints which you need to connect with the help of your own imagination. Then after reading the passage or reading the hints, jot down the points, means write the main points. If the events in the passage are in present tense, mark this sentence. अगर present tense में है, write the story in past tense. Arrange the matter in 2 or 3 paragraphs, not more than this. ना तो बहुत छोटी story होनी चाहिए, ना बहुत बड़ी. Now give a suitable title. Suitable title is required. Now I am giving you this example for developing a story. पहले आप इसमें points और hints देखते जाइए, and then convert it into a readable passage and give a suitable title. Now this is manager of a firm advertised. What did he advertise? Vacancy for night watchman. Applicants presented. They came and the manager was not satisfied. He found something wrong with each man.
There was Raju, an applicant. Okay, he sat in a corner, patiently waiting. His turn came, manager found nothing wrong in his appearance, questioned about his health, got the reply, I suffering from sleeplessness. Manager happy, appointed him. Now इसमें आपको additional आपको क्या अपनी imagination use करनी है? Let us see. Okay, now I'll be giving you the story itself. Okay, let me move this somewhere else here. So answer is, now as I told you, suitable title, Night Watchman. The manager of a firm advertised, see this word advertised, okay? Advertised जो word है, that is the past tense, okay? As I told you कि story present tense में चल रही है, तो आपको past form use करना है. All the applicants were present, okay? यहाँ पे were आपका past है. But the manager was not satisfied. He found something wrong with each man. There was Raju, an applicant. He was sitting in a corner, waiting for his turn. Manager found nothing wrong in his appearance. He questioned about his health. He got the reply that he was suffering from sleeplessness. Manager was happy and appointed him. See, all the past forms have been used. This you have to take care. Okay. Now going to the next slide. Develop the following hints into a story. Hints are: the King of Scotland was defeated 6 times, then hid himself in a cave, saw a spider trying to climb up to the roof of the cave. The spider fell 6 times and then succeeded. The king was encouraged, tried again to defeat his enemies and succeeded. So here we have the answer. Now this is the topic, the king and the spider. ये आपका इसका title हो गया. Then Robert Bruce, the king of Scotland, was defeated 6 times in the battlefield. His enemies occupied his kingdom. He went away. मेरा जो आपको इसको रीड करने का और आपको ये दिखाने का जो मतलब है वो ये है कि you should understand that we are using everywhere past form of all the verbs. Okay, hid himself. There he saw. Then it fell 6 times. Again, past form. Did not give up. Ultimately succeeded. Frustrated king was greatly encouraged. Said to himself, if the spider can succeed, he then to reach the ceiling on the 7th attempt, why not resolved not to fight his enemies again, to take a sweet revenge. He collected and went to the battlefield. Collected, went. Okay. He fought with renewed vigor, his arm and energy, and ultimately succeeded. ठीक है, तो मेन चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि you have to develop the hints in such a way that it becomes sensible enough to read and enjoy the story. Plus you can you have to use your past form. ठीक है, past form कैसे use करना है you must have seen in this example. So here I'll be giving you one story where you have to use your own imagination. Okay, so this is the story. You can use the hints, write your own story, and then test yourself whether you were able to do it properly or not. Okay, so this is the answer. I kept it after one slide so that पहले आप अपनी मेहनत करिए and then you try to see where you were wrong, where you were not able to write. So you have answer for yourself. Everywhere you have to take care. कभी अगर moral लिखने की जरूरत पड़े तो वो भी आप लिख सकते हैं last में. ठीक है. So a big thank you for watching this video. If you feel that it is good enough, please subscribe the channel and share with your friends. Give your valuable comments which may be useful for me to improve in near future. So God bless you all. May God give you success in life and may you become perfect in English language, which is all of the time as it is a universally accepted language. So thank you very much.
God bless you all.